आइसक्रीम के लिए हम ये फुल क्रीम दूध लेंगे, इसे मलाई के साथ ही लेंगे। ये हमने मलाई के साथ 2 लीटर दूध ले लिया है और अब इसे गैस पर रखकर तेज आंच में चलाएंगे। दूध को ऐसे ही गर्म होने देंगे तेज गैस पर और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जल ना जाए। और इसे जब तक चलाएंगे जब तक ये आधा ना रह जाए। ये दूध उबल के अच्छा इकट्ठा हो गया है, गाढ़ा हो गया, कलर भी अच्छा चेंज हो गया। ये देखो अच्छा गाढ़ा हो गया दूध। तो अब इसे अभी हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। ये दूध अभी ठंडा हो गया। अभी इसमें शक्कर मिक्स करेंगे और मिक्सी के जार में इसे चलाएंगे। Never be